Hello friends, I'm Rajesh. Today we'll discuss about input output devices. ठीक तो प्रीवियस क्लास रे ଆମେ କଣ डिस्कस करथिले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भिତରେ डिस्कस करथिले ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ତିନିଟା ଆମର ଭିडिଓ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ डिस्कस करथिले ତ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଡିଭାଇସେସ୍ ତ ଲେଟ୍ସ डिस्कस अबाउट इनपुट आउट डिवाइसेस तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन रहइबो हमरो ना इनपुट आउटपुट IO devices commonly used input devices commonly used output devices then other concept related to input output devices ठीक तो फास्ट हमें डिस्कस करिबा कि जे IO डिवाइस कौन एक्चुअली IO डिवाइस कहले कौन बुझो ठीक अछि तो IO डिवाइस कौन फर्स्ट पॉइंट हला कि जे provide mean provide means communication between a computer and other world provide means क्या है provide means provide means of communication between a computer and outer world तो गोटे कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड भितर जो कम्युनिकेशन हुए सेटा कहती कौन प्रोवाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड मतलब कि आमे गोटे जिनस आमे प्रोवाइड करूचे ठीक अछि प्रोवाइड करछे माने आउटर वर्ल्ड रो कंप्यूटर को आमे प्रोवाइड करछे ठीक also known as also known as a peripheral devices because they surrounded by the CPU and compute and memory of a computer system also known as peripheral devices because they surrounded the CPU and memory of a computer system तो आउटर वर्ल्ड भी हे पारे नले आउरी बहुत सारा जिंस अछि पेरिफेराल डिवाइसेस अछि तो सेटा हमर कोन होई पारे दे सराउंडेड बाय सीपीयू एंड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ठीक अछि the input devices are used to enter data from outside world into primary memory input devices कौन ना input devices are used to enter data from the outside world into primary storage ठीक तो output devices कौन it supplies result of processing from primary storage to users तो इनपुट डिवाइसेस कौन हला इनपुट डिवाइसेस हला कौन ना आर यूज्ड टू एंटर डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड टू प्राइमरी स्टोरेज आउटपुट स्टोर डिवाइस हला सप्लाई results of processing from primary storage to user तो इनपुट डिवाइस कौन बेसिकली इनपुट डिवाइस कौन पे यूज करा जाए एंटर डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड इनटू प्राइमरी स्टोरेज आउटसाइड वर्ल्ड रु प्राइमरी स्टोरेज को आमे डाटा को आमे कौन करबा एंटर करबा तो डाटा को आमे एंटर करबा कोठारु आउटसाइड वर्ल्ड रु प्राइमरी स्टोरेज को ठीक से भलिया आउटपुट डिवाइस कौन सप्लाई results of processing from primary storage to user then जे result को आमे प्रोसेस कर दबा प्रोसेसिंग result हला प्रोसेसिंग result आमे गोटे डाटा एंट्री कर देले देन सेटा प्रोसेस हे सारला परे जो मिले result ताको आमे कोन करबा ना प्राइमरी स्टोरेज रु यूजर को अप्लाई करिया पे आमे कोन यूज करबा ना आउटपुट डिवाइसेस ठीक अछि तो इनपुट डिवाइसेस सिंपली कोन बुझी हला आउटसाइड वर्ल्ड रु प्राइमरी स्टोरेज देन आउटपुट डिवाइसेस कोन हला ना results of processing from primary storage to user ठीक ओके देन देखिबा रोल ऑफ आईओ डिवाइस रोल कोन फास्ट हला कोन ना इनपुट डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड एटू कोन हला डाटाटा इनपुट नेला इनपुट डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड
ठीक अच्छे आम डाटा एक्सटर्नल वर्ल्ड रु इनपुट नेले देन फिर कौन कले इनपुट डिवाइसेस यूज कले एटा हला कौन इनपुट डिवाइसेस आम यूज कले देन इनपुट डिवाइस रो काम कौन ना इनपुट डाटा कोडेड इनटू इंटरनल फॉर्म ताकू से कौन कला इंटरनल फॉर्म में ताकू कोडेड करिवो कोड करिवो इनपुट डाटा कोडेड इनटू इंटरनल फॉर्म ठीक अच्छे तो इंटरनल फॉर्म में ताकू इनपुट करिवो सॉरी इंटरनल फॉर्म में ताकू कोडेड करिवो देन इंटरनल फॉर्म रे कोडेड कर साला परे मतलब कि बाइनरी रे कोडेड हे साला परे एटा कोठी के आसीबो सीपीयू एंड मेमोरी को आसीबो ठीक अच्छे प्रीवियस क्लास रे हम पढ़ी साचे सीपीयू कौन मेमोरी कौन ठीक अच्छे तो सीपीयू एंड मेमोरी को आसला तो मेमोरी परे हेटा कौन हबो जेतेबेले सीपीयू मेमोरी रे हेटा कौन हबो प्रोसेस हबो प्रोसेस होला परे कौन हबो प्रोसेस डाटा इन इंटरनल फॉर्म सेटा तापर नेक्स्ट हमको कौन मिलियो प्रोसेस डाटा माने डाटाटा कौन हला प्रोसेस हे गला प्रोसेस साला परे कौन हबो सेटा ता इंटरनल फॉर्म रे ही थिबो मतलब कि बाइनरी रे थिबो तो बाइनरी टाकू फिर आमे कौन करबा आउटपुट डिवाइसेस को पठेबा तो आउटपुट डिवाइसेस कौन करिवो रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म देन जो से प्रोसेसिंग रो रिजल्ट टाकू से कौन करिवो ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म रे कन्वर्ट कर दबो ठीक अछि दिस इज द रोल ऑफ आईओ डिवाइसेस ठीक तो फास्ट कौन हबो ना इनपुट डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड देन इनपुट डिवाइसेस को गला इनपुट डिवाइस रे कौन हला ना इनपुट डाटा कोडेड इनटू इंटरनल फॉर्म देन सेटू कौन गला सीपीयू एंड मेमोरी गला सीपीयू मेमोरी रे कौन हला ना प्रोसेस डाटा इन इंटरनल फॉर्म रे एटा प्रोसेस हे गला देन सेटा कौन हबो सिंपली एटा कोन हो इंटरनल फॉर्म रे ही रहिबो प्रोसेस डाटा देन तापर कोन हो आउटपुट डिवाइसेस को जिवो आउटपुट डिवाइस रु फिर को कोन मिलबो हमको ना रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर मतलब कि सेटा कोन हो आमे एज ए ह्यूमन आमे से जिंसटा को बुझी परिबा कारण एठी जेतले फास्ट आमे देथिले एटा भी ह्यूमन आमे देथिले ह्यूमन एक्सेप्टेबल मतलब ह्यूमन बुझी पारला भली आमे डाटा दबा एठी देन सीए ताको कोन करिवो बाइनरी कन्वर्ट करिवो देन बाइनरी कन्वर्ट होला पर सीपीयू मेमोरी तो प्रोसेस करिवे प्रोसेस करला पर सेटा फिर सेही इंटरनल फॉर्म में रहइबो मतलब कि बाइनरी रहइबो तापर से कोन हबो आउटपुट डिवाइस रे कोन हबो हेटा फिर बाइनरीटा ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हे जिवो ठीक अछि इट इज वेरी इंपोर्टेंट ठीक देन कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस तो कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस कोन कोन फास्ट हला हमें समस्त जानिछ कॉमनली इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड डिवाइस तापरे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस देन डाटा स्कैनिंग डिवाइस तापरे डिजिटाइजर तापरे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेस्ड डिवाइस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस विजन बेस्ड डिवाइस ठीक अछि दीज आर द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस ठीक अछि तो वन बाय वन हमें देखिबा फास्ट देखिबा कीबोर्ड डिवाइस रो काम कोन रे ना अलाउज डाटा एंट्री into a computer system by pressing a set of keys labeled button तो এটা কোন না allows data into a computer system by pressing a set of keys or labeled buttons ठीक है allows data entry into a computer system by pressing a set of keys or labeled button neatly mounted on a keyboard connected to a computer system neatly mounted on a keyboard connected to a computer system जेटा कि कौन ହେଇଥିବ गुडा हमर कीबोर्ड रे सब गुडाको से बटन गुडाको नीटली माउंटेड ହେଇକି थिबो देन सेटा कहा सहित कनेक्टेड ହେଇଥିବ कंप्यूटर सिस्टम सहित कनेक्टेड ହେଇଥିବ देन टोटल केतेटा कीज अछि हमर 101 कीज अछि 101 कीज अछि 101टा कीज अछि ताकू नॉर्मली कहंती कोन क्वाटी कीपैड क्वाटी कीबोर्ड इज मोस्ट पॉपुलर
ठीक ए 101 keys QWERTY keyboard ठीक अछि आपको नॉर्मली एटा ही कहन ठीक अछि दिस इज कॉल्ड कीबोर्ड डिवाइसेस देन देखो फिगर समस्त देखि परथो दिस इज कॉल्ड आवर कीबोर्ड डिवाइसेस क्लियर next point and draw devices point and draw devices the point and draw devices कौन now used to rapidly point to and select a graphic icon or menu items from multiple options displayed on the graphical user interface of a screen ठीक point and draw devices ठीक ଅଛି तो used to rapidly point to and select a graphic icon or menu it's a form of multiple options uh, displayed on the GUI of a screen this simply कौन कहूची normally से कौन कहूची ना used to rapid point to and select graphic icon or menu item from multiple options displayed on the graphical user interface of a screen कौन जो आमे नॉर्मली हमर जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कंप्यूटर रो इंटरफेस ता अछि GUI अछि तो सेउडा को पॉइंट करिया पई और सिलेक्ट करिया पई जो डिवाइसेस नॉर्मली यूज करा जाय ताको ही कहंती कोन point and draw devices used to create graphic elements on the screen such as lines curves and freehand shapes तो सेउडा पई भी आमे जतले गोटे पर्टिकुलर स्क्रीन ले लाइंस ड्रॉ करिया पई चाहूचे कर्व्स ड्रॉ करिया पई चाहूचे फ्री हैंड शेप दवा पई चाहूचे तो सेउडा पई भी मध्य आमे जो डिवाइसेस यूज करे ताको ही कहंती कोन पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस some commonly used some commonly used some commonly used point and draw devices are कौन ना हमें माउस यूज करे ଗୋଟେ ଅଛି ଟ୍ରାକ୍ ବଲ୍ ୟୁଜ କରେ ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ କରେ ଲାଇଟ୍ ପେନ୍ ୟୁଜ କରେ एंड टच स्क्रीन यूज करे ठीक अछि एवढा ହେଲା କଣ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस क्लियर फास्ट देखिया माउस कौन एटा तो समस्त जानिथिबो माउस कौन कॉमनली यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन ठीक अछि दिस इज कॉल्ड माउस नेक्स्ट आसी ट्रैक बॉल कौन दिस इज क्लिक बटन ठीक अछि एटा बेल ऑफ द राउंड विथ फिंगर कॉमनली यूज्ड लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर से ठीक अछि नेक्स्ट देखिए जॉयस्टिक दिस इज कॉल्ड जॉयस्टिक क्लिक बटन एंड एटा हला तार क्लिक बटन देन एटा हला स्टिक एटा हला बॉल एटा हला सॉकेट एटा हला लाइट इंडिकेटर कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो गेमिंग फ्लाइट सिमुलेटर ट्रेनिंग सिमुलेटर एंड कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स इस सब जगह एटा सब यूज करा जाए ठीक देन इलेक्ट्रॉनिक पेन पेन बेस्ड और पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस पेन बेस्ड यूज टू डायरेक्टली एटा हला कोन पेन बेस्ड pen based and the point and draw device used to directly point with it on the screen to select menu items or icons or directly draw graphics on the screen used to directly point with it on the screen to select menu items or icons or directly draw graphics on the screen. We can write with on a special pad with direct input of the written information to the system. ठीक अछि pressure on the tip of the side button is used to cause same action
as right button click of the mouse. ठीक, this is called electronic pen. Then next is touch screen. Touch screen कौन? The most simple and intuitive and easiest to learn of all input devices. This is called touch screen. The most simple, intuitive and easiest to learn input devices. सेटा then enables users to choose from uh, available options by simply touching with their fingers and desired icon or menu item displayed on the screen. Enable user. तो यूजर को एनाबल करने कौन ना choose from available options by simply touching with their fingers and desired icon और मेनू आइटम्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. द स्क्रीन ले बहुत सारा आइकन जति मेनू सब देखा जाए से हम फिंगर रे सेटा को हम टच कर परिबा, सिंपली टच कर परिबा. से सब जिंस यूजर को से कोन करे एनाबल करे. मोस्ट प्रिफर्ड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस यूज्ड इन इंफॉर्मेशन kiosks टा कोन ना unattended interactive information system such as automatic teller machine. देखो आमे समस्ते पैसा उठाया पे जाउचे कोठी के, आमे समस्ते पैसा उठाया पे कोठी के जाउचे ना एटीएम जाउचे, समस्ते जानिथिबो. ठीक अछि, दिस इज आल्सो ए कंप्यूटर. ठीक अछि ना, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस यूज्ड इन इंफॉर्मेशन कियोस्क जेटा कहंती अटेंडेंट इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एटीएम. ठीक अछि, तो एटीएम रो फुल फॉर्म जानि गले समझते ऑटोमेटिक टेलर मशीन. दिस इज कॉल्ड टच स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट आसीबा डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस. डाटा को केमती हमें स्कैन करे. ठीक अछि, द इनपुट डिवाइसेस that enable direct data entry into a computer system from source documents, then eliminate the need to key in next data into the computer. So input devices कौन ना, input devices that enable direct data entry to the computer. ठीक अछि ना, तो कंप्यूटर को हमें डायरेक्टली डाटा एंट्री करे कंप्यूटर सिस्टम को फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक अछि, एलिमिनेट द नीड टू की इन टेक्स्ट डाटा इनटू द कंप्यूटर. एलिमिनेट हम कर दे नीड टू की इन द टेक्स्ट डाटा इनटू द कंप्यूटर. ठीक, देन ड्यू टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट इन डाटा एंट्री रो. ठीक अछि, एटा बहुत ही ह्यूमन एफर्ट लागे इन डाटा एंट्री, सब किछि जिंस हमको टाइप करिया पे पड़िबो. दे improve data accuracy and also increase the timelines of the information processed. Due to reduced human effort in data entry, they improve data accuracy and also increase the timeline timeline timeliness of the information processed. Demand high quality of input document. ठीक, some data scanning devices. Okay, some data scanning devices are also capable of recognizing marks or characters. ठीक, some data scanning devices are also capable of recognizing marks or characters. From design and ink specification usually become more critical or accuracy. From design and ink specification usually becomes more critical and accuracy. ठीक अछि, किछि डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस अछि से कोन कैपेबल हुए recognizing marks and characters. Or from design and ink specification usually becomes more critical for accuracy.
ठीक है। तो बेसिकली डाटा स्कानिंग डिवाइस ଅଛି ସେ କଣ କରେ ନା କିଛି ଡାଟାକୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍କାନ କରିଦେବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମକୁ କିଜ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ ଟା କମିଯିବ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ, ଦିସ୍ ଇଜ କଣ ଇମେଜ ସ୍କାନର। ଇମେଜ କୁ ସେଟା ଡାଟା ସ୍କାନ କରୁଥିଲା, ଏଟା ଇମେଜ ସ୍କାନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଇନପୁଟ ଡିଭାଇସ they translate proper document into an electronic format for storage in a computer. Input device input device they translate proper documents. Input device कौन करे, they translate proper documents. से कौन करे ना proper document को translate करे into an electronic format for storage in a computer. ठीक है। तो पेपर डॉक्यूमेंट को से कौन करे ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट रे कौन करे ताको ट्रांसलेट करे। तो ट्रांसलेट हेबर हेड कौन हबो ना सेटा कंप्यूटर रे स्टोर हे परिबो। ठीक, देन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ ए स्कैन्ड इमेज, जो स्कैन्ड इमेज कले हेटा इलेक्ट्रिक फॉर्मेट रे थाए इज इट्स बीट मैप रिप्रेजेंटेशन। आको बेसिकली मैप रिप्रेजेंटेशन पे यूज करे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ ए स्कैन्ड इमेज इज इट्स बिट्स मैप रिप्रेजेंटेशन, बिट मैप रिप्रेजेंटेशन नहीं था। एंड stored image can be altered or manipulated with an image processing software. ठीक है, stored image can be altered or manipulated with an image processing software. ठीक, this is called image scanner. okay, देखो टू टाइप्स ऑफ इमेज स्कैनर, गोटे हला फ्लैट बेड स्कैनर। एमती गोटे समस्या देखिथिबो शॉप मानकरे सेमाने कोन करନ୍ତି ना एई भळा गोटे मेसिन थाए, ता भितर से गोटे पेपर देई दियंती, देन सेटा को से स्कैन करके पीडीएफ रे कन्वर्ट कर दिए, जो फॉर्मेट तुमे चाहबो ओटा को कन्वर्ट कर परिबो। ठीक अछि, देन एटा हला हैंड हेल्ड स्कैनर जेटा कि हमें शॉपिंग मॉल रे देखिथिबो, से बहुत सारा जिनिस को से स्कैन करे। ठीक अछि, तापर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर डिवाइस। ठीक अछि, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ओसीआर डिवाइस ये कौन देखो, स्कैनर required with a character recognition software called OCR, character recognition software that convert bitmap image of character okay of character to equivalent ASCII code रे। तो बीट ऑफ इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स, बीट ऑफ इमेजेस ऑफ कैरेक्टर को हमें ताको कौन टू इक्विवेलेंट आस्की कोड रे ताको कन्वर्ट कर दिए। ठीक, देन कौन बेनिफिट हबो ना enables word processing of input text and also requires less storage for storing document as text rather than image। এটা कौन हबो ना बहुत ही कम स्पेस रिक्वायर करिवो, लेस स्टोरेज रिक्वायर करिवो ए भलिया कले। ठीक अछि ना, then OCR software is extremely complex because it is difficult to make a computer recognize an unlimited number of typeface and fonts। OCR software is extremely complex, এটা बहुत ही complex because it is difficult to make a computer recognize an unlimited number of typefaces and fonts। এটা ଟିକେ ବହୁତ complex କାରଣ it is difficult to make a computer recognize an unlimited number of typeface and fonts। ठीक ଅଛି, unlimited କାମ ପାଇଁ ଟିକେ complex ହେଇଯିବ। Standard OCR fonts are OCR A, this is called American standard, and OCR B is the Europe standard। ठीक, then ऑप्टिकल मार्क रीडर नेक्स्ट आसीबा। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये कौन ना स्कैनर कैपेबल of recognize a pre-specified type of mark by pencil or pen। Scanner capable of recognizing a pre-specified type of mark by pencil or pen। ठीक है जी, then very useful for grading test with objective type, very useful for grading test with objective type questions or for any input data that is of a choice or selection nature।
ठीक है, टेक्निक यूज्ड फॉर recognition of mark evaluation, focusing a light on the page being scanned and detecting the reflected light pattern from the mark। ঠিক আছে, ବହୁତ ସାରା ଦେଖିବ ଆମର OMR ସିଟ୍। OMR ସିଟ୍ ମାନେ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର। ଠିକ ଅଛି, OMR ସିଟ୍ ଦେଇଛ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଛେ, ସେଥିରେ କଣ କରେ, ଆମେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ 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 କରିଥାଏ। ତ ସେଇ ରାଉଣ୍ଡ କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ସେଟାକୁ ସେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିକି ସେ ଆନ୍ସର ଟା ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ସିଏ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ମାର୍କ ଟା ଆସିପାରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ OMR, ଅପ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ ରିଡର। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଟେକ୍ନିକ କୁ ୟୁଜ କରିକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାର୍କ ଇଭାଲୁଏସନ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ। ଠିକ, ଦିସ୍ ଇଜ ସାମ୍ପଲ ୟୁଜ ଅଫ OMR। ଏମିତି ସାମ୍ପଲ ୟୁଜ ଅଫ OMR ଥାଏ, ଦେନ୍ ସେଟାକୁ ସେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କଣ ନା ବାରକୋଡ ରିଡର। ବାରକୋଡ ରିଡର କଣ? A scanner, a scanner used for reading or decoding barcode data. Barcoded data. A scanner used for recording or decoding barcoded data. The barcodes represents alphanumeric data by a combination of adjacent vertical lines or bars by varying their width and the spacing between them. Barcodes represents alphanumeric data. Barcode कौन represents करे ना alphanumeric data by a combination of adjacent vertical lines ଥାଏ तारो by varying their width and shape between them। तारो width ଆଉ तारो shape ये सब कौन हुए different ଥାଏ। Scanner uses laser beam to stroke across pattern of barcode। Scanner use कौन करे laser beam to stroke across pattern of barcode। ठीक है, the scanner uses कौन laser beam use करे to stroke across pattern barcode। Different patterns of bars reflect the different patterns of bars reflect the beam in different way। Beam in different way sensed by a light sensitive detector। The different patterns of bar reflect the beam। ठीक ଅଛି, the different patterns of bar reflect the beam in different way sensed by a light sensitive detector। ठीक ଅଛି, then universal product code UPC is the most widely known barcoding system। ସେଥିରେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଟା ନର୍ମାଲି ୟୁଜ କରାଯାଏ ବାରକୋଡିଂ ସିଷ୍ଟମ, ସେଟା ହେଲା କଣ ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋଡ। ଏଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୟୁନିଭର୍ସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋଡ ସେ ୟୁଜ କରିକି ବାରକୋଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ସେ ଡେଭଲପ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୟୁଜ ଅଫ PCB ବାରକୋଡ get category character 0 grocery products। 0 ହେଇଗଲା, ଏଟା ହଉଛି grocery products ପାଇଁ ଏଗୁଡା ରହିଗଲା 0। 3 ହେଲା drugs health related products 3। ଠିକ, ଏଟା ହେଲା 0, ଏଟା ହେଲା 3। ଠିକ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଏ ପାର୍ଟଟା ରହିଲା। ତାପରେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଟା ହେଲା କଣ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ସପ୍ଲାୟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର ରହିଲା ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ବେସିକାଲି କଣ 0। ତ ଏଟା ହେଲା କଣ ସ୍ପେସିଫିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋଡ ନମ୍ବର ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋଡ ନମ୍ବର ରହିଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାର ଏଇ ବାରକୋଡ ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟାର ଜିନିଷ ତାର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ UCB ବାରକୋଡ ସିଷ୍ଟମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ MICR। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଇଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ଏଟା କଣ ନା MICR is used by banking industry for faster processing of large volume of checks। MICR used by banking industry। ठीक ଅଛି, banking industry ପାଇଁ ୟୁଜ କରେ for faster processing of large volume of check। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କୋଡ ନେମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଟସେଟ୍ରା and account number check number are pre-printed or encoded using character from special character set of all checks।
from a special character set on all checks. Then special ink is used that contain magnetizable particles or iron oxide. The special ink is used that contains ଏଥିରେ କଣ contain କରେ magnetizable particle or iron oxide. The MCA reader shutter reads data on checks and sorts them for distribution to other banks or further processing. ठीक ଅଛି एटा यूज करे से देखो एमती ही था MICR कैरेक्टर सेट एमती ही था ठीक है एमती ही था it consists of numerals 0 to 9 for special characters. MICR not adopted by other industrial because it supported only 14 symbols. ठीक ठीक तो क्लियर है तो एटा हला MICR कैरेक्टर सेट और E13B फॉन्ट ठीक अछि नेक्स्ट आसीबा डिजिटाइजर डिजिटाइजर कौन ना इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग डिजिटाइजिंग पिक्चर्स मैप्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर तो डिजिटाइजर कौन ना input device used for converting digitizing picture map and drawing into digital form for storage in computer so input device used to converting or digitizing picture maps and drawing into digital form of storage in the computer मतलब कि ये डिजिटाइजर कौन करे ना हमें नॉर्मली पिक्चर्स मैप हैला ड्राइंग को से डिजिटल फॉर्म रे स्टोर करे इन कंप्यूटर रे ठीक अछि तो commonly used in the area of computer aided design CAD by architects and engineers to design cars, buildings, medical device, robots, mechanical parts. ठीक ଅଛି तो commonly used in the area of CAD मतलब कि computer aided design ले normally ये सब digitizer use करा जाए by architecture and engineers आर्किटेक्ट्स माने यूज करंती इंजीनियर्स माने यूज करंती कौन टू डिजाइन कार को डिजाइन करिबा बिल्डिंग्स को डिजाइन करिबा मेडिकल डिवाइस को डिजाइन करिबा रोबोट्स को डिजाइन करिबा मैकेनिकल पार्ट्स को डिजाइन करिबा इसु डिजाइन करिबारे डिजिटाइजर यूज करा जाय सेटा कोन एरिया हला कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैट ठीक अछि then used in area of geographical information system very important GIS geographical information system ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରାଯାଏ for digitizing map available in the paper form तुम पेपर फॉर्म ରେ ଥିବ ସେଟାକୁ ସେ ପୁରା ପୁରି डिजिटाइज କରି ପାରିବ ଠିକ ଅଛି this is called geographical information system ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ହେଲା digitizer tablet and stylus in the form of cross hair cursor ठीक ଅଛି this is called digitizer नेक्स्ट देखिबा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर कौन देखो the electronic cards are small plastic card having encoded data appropriate for the application for which they are used digital cards कौन are small plastic card ना बहुत ही छोटो plastic card हेतु having encoded data appropriate तर किछि data appropriate for the application किछि applications ପାଇଁ for which they are used ठीक अछि ताकि यूज करा जिवो then electronic card reader normally connected to a computer होला कंप्यूटर सहित कनेक्टेड हेइथिबो एटा is used to read data encoded on an electronic card and transfer it to the computer for further processing ठीक अछि तो से कार्ड कोन होइथिबो ना बहुत सारा किछि इन्फॉर्मेशन थिबो देन से इन्फॉर्मेशन टा से कंप्यूटर कोन करियो ताकू से फेच कर नबो देन सेटा को से फिर कंप्यूटर को ट्रांसफर कर दो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग पाई ठीक अछि यूज टुगेदर एज ए मींस ऑफ डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम यूज टुगेदर ठीक अछि ताकू यूज करा जाय टुगेदर
ମାନେ ସବୁକୁ एका ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ यूज करे मीन्स ऑफ डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। तो एग्जांपल कौन यूज्ड बाय ए बैंक फॉर यूज ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम एंड बाय organizing for controlling access of employee for physical secured area। ठीक अच्छे मतलब कि एटीएम कार्ड रे आमे यूज करे। ठीक अच्छे एटीएम कार्ड रे जो बहुत सारा थाए ना से बहुत सारा इनफॉरमेशन थाए तो सेटा जतरा आमे एटीएम रे एंट्री कर दिए से इनफॉरमेशन हम पाए जे हां एटा हमरी कार्ड से रिकॉग्नाइज कर पारे। से बडा आमे जतरा एम्प्लॉय गुटे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंपनी आमे जतरा जॉब करबा जॉब करछे जो माने जॉब करंती। ठीक अछि तो से मानक पाखर गुटे आईडी कार्ड थाए से आईडी कार्ड को जतरा आमे सेठी देखै दिए से कोन करे सेटा को से स्कैन करनी से रिकॉग्नाइज कर पाए जे हां तुम पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ठीक अछि ना दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। क्लियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। The next, speech recognition device. Speech recognition device कौन ना input device that allows a person to input data to a computer system by speaking to it। ठीक है input that allow person to input data to a computer system by speaking to it। ଆମେ जो जहाँ भी कथा कहूचे बा जहाँ भी आमे कहूचे बा हमर ऑडियो टाकू से मध्य इनपुट डिवाइसेस अछि सेटा को से कोन करि पारे स्टोर करि पारे। ठीक अछि today speech recognition system are limited to accepting a few words within a alternatively small domain and can be used for enter only limited kinds and quantities of data। ना ठीक है एबे स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम एते यूज हो नाही। ठीक है टाइप्स ऑफ स्पीच रिकग्नाइजेशन गोटे सिंगल वर्ड रिकग्नाइजेशन सिस्टम देन आउट अछि कंटीन्यूअस स्पीच रिकग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है used for speech recognition input data from computer system by a person and situation where he hands and RPG and he eyes are most fixed in the measuring moment and some other object for data input direction or long text or passages for the later editing review for a automatic of a user by a computer system based on voice input for limited use of computers by individual with physical disabilities। ठीक है ये सब जिन पे हम यूज करूँ। तापर vision input system। vision input system कौन ना allow computer to accept input just by seeing an object। allow computer to accept input होला से कंप्यूटर को allow the computer to accept input होला input को accept करे just by seeing an object and input data is normally an object shape and feature in the form of an image। ठीक है input data is normally an object shape and feature in the form of an image रे थाए। ठीक है the mainly used today in factories for designing industrial robots that are used for quality control and assembly process। एइथପାଇଁ यूज कराଯାଏ mainly used for today in factories for designing industrial robots by यूज कराଯାए vision input system। ठीक ठीक ଅଛି तो एतिकी ही थिला हम पाखरे जी इनपुट डिवाइसेस कौन देखि गले आमे गोटे गोटे देखिबा vision input system देखि गले नेक्स्ट देखि गले तापरे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस तापरे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर देन नेक्स्ट देखिले एटा हला डिजिटाइजर। ठीक अछि एमआईसीआर बारकोड रीडर। ठीक अछि देन एमआईसीआर हां एमआईसीआर बारकोड रीडर तापरे ओएमआर तार ओसीआर डिवाइस तापरे इमेज स्कैनर डाटा स्कैनिंग डिवाइस टच स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पेन देन जॉयस्टिक ट्रैकबॉल माउस पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस देन कीबोर्ड डिवाइस। ठीक अछि तो एउडा का हमें एतिक जिंस हमें जानि गले दे कॉमनली यूज्ड फॉर इनपुट डिवाइसेस। तेरु बहुत सारा ओजेई पई एथिरे बहुत सारा क्वेश्चंस आसे आकु भलो भाबरे हमकु जानिबार अछि और आकु मेमोराइज मध्ये करिवार अछि। ठीक अछि तो आज पई एतिक थाउ देन नेक्स्ट हमें देखिबा आउटपुट डिवाइसेस। ठीक अछि।